Welcome to the lecture of week 3. Topics of this week includes Charles' law and the related numerical problems. Charles' law, derivation, expression, graphical explanation, and along with that its practical applications जिसमें numerical solve करने का आपको method बताया जाएगा. Before starting with the Charles' law, let's have a recap of effect of temperature on volume. So what's the effect of temperature on a volume? We have studied already. With the increase of temperature, there is a gradual increase in volume of a gas. The fact comes how it is possible. The very first thing, whenever there is an increase in temperature, there is basically increase in kinetic energy of molecules of gas. Whenever kinetic energy increases, definitely there will be a more speedy motion. Particles move at a faster speed, collide with a greater force with one another and with the walls of container. As a result, number of collisions increases. There is an increase in force acting on unit area. With the increase of that force, pressure exerted by the particles of gas increases, which results in the movement of movable piston cover over the container in the upward direction, which results in the increase of volume. So basically जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, मोर स्पीडीली कोलाइड करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर और एज अ रिजल्ट कंटेनर का वॉल्यूम राइज होगा ड्यू टू विच द गैस कैन एक्सपैंड. So effect of temperature directly increases the volume of a gas. To quantify the relationship between temperature and volume of a gas, Charles' law is applicable. First thing, the statement of law. The statement of law, it states that the volume of a given mass of a gas, quantity यहाँ specified कर दी, number of particles constant, varies directly with the absolute temperature. इनके volume और absolute temperature, they are directly related at constant pressure. Second, एक और variable भी है which must be kept constant, which is pressure. So basically gas law की definition fulfill हो रही है. The influence of one variable on another. One is temperature, on another is the volume. By keeping the rest of two constant, और वो rest of two क्या होंगे यहाँ पर? Number of particles and pressure. Derivation क्या है? Relationship क्या बताता है? V is directly proportional to T. V is equal to constant into T. Constant depending upon the given conditions, nature of gas, it depends on that. So V over T. T यहाँ multiply हो रहा है, last step में it will be in denominator, so V by T is a constant. So basically for Charles law, what is the pet conclusion? Ratio of volume and temperature remains constant. That is V by T ratio. Volume और temperature दोनों को divide करें, ratio comes out to be constant whatever the values of volume and temperature. Their ratio will be constant. Variation होगी definitely with the increase of temperature volume increase करेगा, but whenever you will take the ratio तो वो previous condition के ratio के equal आएगी. So V over T remains constant. Here comes an explanation with the help of an example. Consider the data collected during an experiment. Experiment आप ये observe करें कि let's suppose taking a cylinder, closed container, having a movable piston. So उसमें आप बर्नर प्रोवाइड कर देते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं. So जैसे जैसे कंटेनर को आपने हीट प्रोवाइड की, ग्रेजुअली आप देखेंगे पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा है एंड द वॉल्यूम occupied by the gas will also increase. यहाँ 4 different experiments हैं, उनका डाटा कलेक्ट किया गया. The very first one, temperature is 0 degree Celsius and at 0 degree Celsius volume is 1 decimeter cube. Second, temperature is 100, volume is 1.37. Third, temperature is 200, it's 1.73 decimeter cube. Last, fourth में reading बताई जा रही है 300 degree Celsius and the volume becomes 2.10 decimeter cube. So it is easily observable from the given data that with the gradual increase of temperature, there is a gradual increase in volume. So from this data, it's concluded that temperature and the volume of a gas, they are directly proportional to each other, keeping the quantity and the pressure constant. In order to elaborate that temperature volume ratio remains constant, तो उसके लिए आप उसी प्रीवियस टेबल को एक्सपेंड करें. इट कुड बी इजीली ऑब्जर्वेबल दैट टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम रेशियो
इज कांस्टेंट, V by T इज कांस्टेंट। वहाँ प्रीवियसली आपने देखा कि 3 ब्लॉक्स थे, एक्सपेरिमेंट नंबर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, लास्ट में यहाँ V by T इक्वल्स टू कांस्टेंट का कॉलम ऐड किया गया। फर्स्ट वॉल्यूम इज 1, टेम्परेचर इज 273 केल्विन। सो हियर कम द कंडीशन कि आपने चेंज किया है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। वाई, ये आपको क्लियर होगा इन द वेरी नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ हम देखते हैं कि वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब, टेम्परेचर 270 केल्विन, V by T इज 0.0037, एक वैल्यू आपको न्यूमेरिकल मिल रही है। सेकंड में देखते हैं 1.37 वॉल्यूम, टेम्परेचर इज 373, सो कांस्टेंट वैल्यू। 1.73, 473 कांस्टेंट वैल्यू। सो आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं इजीली कि विद द एक्सपेंशन ऑफ द प्रीवियस टेबल एक कॉलम V by T का ऐड किया गया, तो फॉर ऑल द 4 एक्सपेरिमेंट्स V by T remains constant. From the data it's concluded that V by T is constant, V is equal to T into constant. At the end result, V is directly proportional to T. So here comes another formula for the Charles law कि अगर आप ये देखें कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का V हम V1 ले लेते हैं, सेकंड एक्सपेरिमेंट का V हम V2 ले लेते हैं। सिमिलरली सिमिल्टेनियसली यहाँ पर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर T1 ले लेते हैं एंड द सेकंड वन टेम्परेचर विल बी T2. सो व्हाट कम्स द रिजल्ट? रिजल्ट ये आता है कि V1 over T1 is equal to V2 over T2. Another applicable formula for charge law. Whenever the numerical problems come, तो आपने ये formula use करना है. If the 3 quantities are given, then fourth one can easily be calculated. Graphical representation or explanation of the charge law with the help of a graph. Important point है, Boyle's law में भी आपको ग्राफ बताया जाता है, बट दैट वाज वेरी सिंपल, क्वाइट सिंपल, जिसमें आप सिंपली एक स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करते हैं, वॉल्यूम और प्रेशर की रीडिंग्स ले लेते हैं। अगेन ओवर हियर द स्ट्रेट लाइन कम्स, बट डेटा ये जो प्रीवियसली आपको डिस्कस किया गया, इसी को हम इंटरप्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। प्लॉट द टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस एंड द वॉल्यूम ऑफ वाई एक्सिस। कंडीशन है ग्राफ ड्रॉ करने की, dependent quantity on y-axis and independent quantity on x-axis. So here comes the temperature must be drawn at y-axis or x-axis. Yes, it's x-axis, and the volume will be on y-axis. Second thing, convert temperature into absolute or Kelvin scale. What's the absolute or Kelvin scale? Capital T से temperature represent किया जाता है, which is known as absolute or Kelvin. 3 different measuring units in which temperature is measured: degree Celsius, Fahrenheit and Kelvin scale. For the Charles law, it's a basic condition that temperature must be in Kelvin scale, otherwise the law does not hold. Correct. प्रूव नहीं कर सकते आप, उसमें रीडिंग करेक्ट आंसर नहीं आएगा। डाटा आपको V1 over T1 equals to V2 over T2 तभी देता है जब आपने टेम्परेचर केल्विन स्केल में दिया हो। इसकी रीज़न आप ग्राफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। अगर आप ग्राफ लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 0 लिया, बट द वॉल्यूम डज नॉट बिकम 0, वॉल्यूम की कोई ना कोई वैल्यू वहाँ रिजाइड कर रही है। लेकिन वही टेम्परेचर अगर आप ले लेते हैं -273 डिग्री सेल्सियस, और यू कैन से इट्स अ केल्विन स्केल, केल्विन का वो 0 होगा, डिग्री सेल्सियस का -273 होगा। ओवर देयर द वॉल्यूम ऑफ द गैस could be interpreted as a 0. Practically it's not possible, 0 नहीं होता, क्योंकि definitely गैस वहाँ से escape तो नहीं करेगी from the container. The condition is कि volume becomes very small, इतना स्मॉल कि इट क्वाइट बी नेग्लिजिबल। सो इसलिए हम देखिए टेम्परेचर अगर आप डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो -273 पर जाकर वॉल्यूम 0 होता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट कि हम -273, -173, -100 इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं, हमने -273 डिग्री सेल्सियस पर अ न्यू स्केल वॉज डिवाइज्ड एंड दैट न्यू स्केल इज केल्विन स्केल और एब्सोल्यूट केल्विन। एब्सोल्यूट इसलिए कहते हैं कि दैट टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन is known as absolute 0. Why? Because over there we imagine that the volume is very close to 0, although could not be 0. ये practically possible ही नहीं। So temperature versus volume. ग्राफ प्लॉट करेंगे, रिलेशनशिप कम्स आउट टू बी अ वेरी स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन इंटरप्रेट करती है कि दैट अगेन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, बट कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर मस्ट बी विद द एब्सोल्यूट स्केल और केल्विन स्केल। सो बाय स्टडिंग द चार्ज लॉ
experimental explanation, example, graphical explanation. What's the conclusion? Conclusion is that the straight line between the temperature and volume, it suggests that there is a clear direct relationship between volume and temperature. But condition क्या देनी है कि temperature should be measured at Kelvin scale at constant pressure. So condition है कि pressure should be constant, quantity of the gas must be constant, so temperature must be in Kelvin. तो आप observe करेंगे कि volume and temperature is directly proportional to each other. So V by T constant, V equals to T into constant, or V is proportional to T. So this relationship is known as charge law. Numerical. Let's have a look at how to sort out the quantitative data related with charge law. A perfect elastic balloon filled with helium gas has a volume of 1.25 10 raised power 3 decimeter cube at 1 atm and 25 degrees Celsius on ascent to a certain altitude. सो एक परफेक्ट इलास्टिक बैलून, एक बैलून मूवमेंट बता रहे हैं. इनिशियली उसका वॉल्यूम क्या है 1.25 10 पावर 3 डेसीमीटर क्यूब और प्रेशर इज 1 atm, टेम्परेचर इज 25 degrees Celsius. It is ascending down where the temperature is 15 degrees Celsius. The volume becomes 1.208 10 power 3 decimeter cube. 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर रिड्यूस हुआ 15 डिग्री सेल्सियस. अंडरस्टूड था वॉल्यूम भी रिड्यूस होना चाहिए था. सो इजीली ऑब्जर्वेबल फ्रॉम द वैल्यूज 1.25 10 पावर 3 से वो डिक्रीज कर रहा है 1.208 10 पावर 3. सो क्लियर यहाँ से भी अंदाजा हो रहा है कि इट्स अ वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप. शो दैट दिस डाटा सेटिस्फाइज द चार्ज लॉ. आपने ये बताना है कि वेदर ये वैल्यूज V1 T1 V2 T2 करके प्रूव हो रही हैं कि नहीं, वेदर द गिवन डाटा इज अकॉर्डेंस विद द चार्ज लॉ और नॉट. सो डाटा देखते हैं. इनिशियल वैल्यूज टेम्परेचर T1 इज 25 डिग्री सेल्सियस must be changed into Kelvin, so it comes out to be 298 Kelvin. Volume V1 is given 1.25 10 power 3 decimeter cube. These are the initial values, initial conditions. What are the final values? Temperature T2, जहाँ वो move करके balloon move कर रहा है. So what's the second temperature? It's 15 degrees Celsius. In Kelvin it is 288. Second volume V2 is 1.208 power 3 decimeter cube. So volume reduce हो रहा है. Let's say take a formula V1 over T1 equals to V2 over T2. Solution क्या बताता है? Value substitute करें. Right hand side is equal to left hand side. A very minor decimal fraction difference आ रहा है. It is acceptable. So 4.196 is equals to 4.194. Right hand side equal to left hand side. तो ये क्या बताती है कि the given data is accordance with the charge law. So hence it is proved. That's all from this week. Thank you. Solve your assessment of this week as early as possible. If you have any queries, you can ask in the group.